brilliant directors and brilliant actors, and stories are such heartwarming stories coming from Bombay. अगर कोई अच्छा शेफ है, he has to be or she has to be sensitive because ये बहुत और acting same thing, these are all sense. इसने बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया है I love you बोलने को. मैं आज भी अपनी मम्मा को बोलता ना, मम्मा I love you. Hello दोस्तों, welcome to the Bollywood talk show on IWMBuzz. This is your host Shubhoj. It gives me immense pleasure to welcome this lovely cast of Modern Love Mumbai over here. Bai is the story that's what we're going to be talking about right now. I have with me Pratik Gandhi, the very talented, uber cool Talat Aziz sir. So it's an honor to have you. And the very wonderful Ranveer sir. खाना खिलाना उनका बाकी अभी मुझे, but we are waiting for that moment. But anyway sir, सबसे पहले आप तीनों को, it's a very important story, you know, especially when there are creative people coming together at the same time. 6 अलग-अलग stories है, so you know for a very fact that it's not just your efforts that come into play, but the entire teamwork that comes that results in the entire output. So how secure do you need to be as an individual, as a performing artist, in order to give your best foot forward and also rely and have that trust on others? Yeah, yes, I mean, I take it as my responsibility to add as much value as possible from my side, because it's such a great ensemble, brilliant directors and brilliant actors, and stories are such heartwarming stories coming from Bombay, that too all talking about love, and under the biggest umbrella and the biggest franchise, Modern Love, which has already, you know, tested the love from across the globe. Yes, and, I mean, a lot of people in different countries have already watched it and loved it. So all the more responsibility is what I felt when I said yes to it and when I was performing. I'm very curious to know about sir your casting. I'm very happy first of all. That is a different thing altogether. But ये कहाँ से चालू हुआ? And I think you're playing his father as well. Yes. It's a wonderful thing. ये कहाँ से हुआ ये casting का आप बताओ please sir. हाँ, मैं अभी बता रहा था कि मैंने एक्टिंग तो पहले की है, ये अलग बात है कि मैं अलग-अलग बहुत सिलेक्टिव की है जी. जब ये मुझे अप्रोच किए कहानी के साथ, तो कहानी सुनी नहीं, सच बता रहा हूँ जी. मैंने कहा डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा कि हंसल मेहता साहब. मैंने कहा डन, क्योंकि हंसल से मेरी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, एक दूसरे को जानते थे जी. लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत सेंसिटिव है, म्यूजिकली इंक्लाइंड है, और जो म्यूजिकल होता है ना वो सेंसिटिव होता है, बिकॉज विदाउट सेंसिटिविटी यू कैन नॉट बी म्यूजिकल. करेक्ट. खाने की बात कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा शेफ है, ही हैज़ टू बी और शी हैज़ टू बी सेंसिटिव, बिकॉज ये बहुत और एक्टिंग सेम थिंग, दिस आर ऑल सेंसिटिविटीज़ जो आती हैं. तो अगर सेंसिटिविटी डायरेक्टर में भी है, तो मैंने कहा ये करता हूँ मैं. तो फिर मुझे बाद में कैरेक्टर बताया गया कि आप एक जो भी कैरेक्टर है इनके बारे में, आई वुड नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू रिवील, बट ये है कि मेरा कैरेक्टर जो प्ले कर रहा हूँ मैंने कन्विक्शन के साथ और ईमानदारी के साथ प्ले किया. हालांकि कुछ ऐसे उसमें एपिसोड्स हैं पर्सनालिटी के जो मेरे नहीं हैं, लेकिन मैंने कर दिए. मजा आने वाला है मतलब हम लोग को. हाँ, देखिए आप. क्या बात है, प्रतीक का रिएक्शन ही बता रहे हैं मजा आने वाला. लवली. बट यू नो, आपसे मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, you're such a celebrated, I mean, I don't have to say anything, everybody, the entire country knows it. When you get a character like this as well, when you have to play something what you are in real life, it's probably a cliche question, but it's a very valid question. Is it easier or is it difficult? Because deep down the line, you also have to do justice to Ranveer Brar, the personality in real life. So it is. So first of all, I didn't feel the pressure to do justice to Ranveer Brar, the personality. I think you know, that was the first thing that I sort of shed. दूसरा, it's a very good question. If you're a chef playing a chef, how much of yourself do you carry through? Yes. देखिए, जो अगर आप शेफ हैं, तो खाने के सामने आप जाएंगे तो आप शेफ बन ही जाएंगे. You can't change that. Your reaction to food. अब सिवई बन रही है तो I can't act. Yes. You know, I can't do that. अगर निहारी बन रही है तो जो बन रही है, जो मेरी आंखों में है वो है. Yes. Right? And I think that's one of the reasons why Hansal sir sort of thought of me as the person to play. But beyond that, you know, एक तो है कि आप ये मेरा खाने के साथ रिश्ता है. इसके साथ मैं रिएक्ट करता आया हूँ और वो चेंज नहीं हो सकता. Yes. लेकिन बियॉन्ड दैट जब आप रियल जिंदगी में जाते हैं, रियल लोगों से मिलते हैं, तो फिर आपका रिएक्शन जेन्युइनली चेंज होगा ना. क्योंकि सामने वाले का रिएक्शन चेंज है. यू आर प्लेइंग समबडी एल्स देन. सो एवरी टाइम व्हेन आई वाज नॉट इन द किचन, आई वुड से दैट आई वाज नॉट Ranveer. But when I was in the kitchen and with food and cooking,
That's when Ranveer Brar used to come. Yeah, I was Ranveer. Yeah. मतलब वो चेंज नहीं हो सकता. When you saw scams. अब आप सर को अगर आप हारमोनियम दे दें अरे हाँ, और उसके बाद चाहे वो पिताजी का रोल करें या किसका भी रोल करें, वो एक बार मुझे हारमोनियम की जरूरत नहीं है, मैं तानपुरा छिड़का ऐसे गा दूंगा. सुर है सर, तानपुरा है मेरे पास भी है, मैं तो सिखाता हूँ. But you know, I have to talk it because he became a sensation. You saw Scam 92, I'm pretty sure. What was your initial reaction when you saw him perform? That was fantastic. I think effortlessness जो थी उसमें. Absolutely, that is the word. Effortlessness. Effortlessness और honesty. ये बंदा जो है, मैं तो पहली बार मिला. जी. Frankly speaking, मैं Scam देखा भी नहीं था ज़रूर आपके, with all due respect. जब हम काम करना शुरू किए, तो his simplicity towards his character, towards everybody, very quiet. जी. और जब सीन जब होता है, शॉट जब लगता है, तो देन ही ट्रांसफॉर्म्स. उसमें एक खामोशी में भी एक बहुत ही गंभीरता है. ही इज वेरी ग्राउंडेड. आई हैव टोल्ड दिस, आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स और नॉट, लास्ट टाइम आई डिड अ चैट, आई टोल्ड हिम कि आप जो आंखों से करते हो, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट अजय देवगन डज. He also enacts with his eyes. You also have that ability to do Manoj that. Also. Manoj Bajpayee sir as well. So these are great performers. Abhi I just did a film with him, so I know. Manoj, तो basically आंखों से सारी चीजें expression जो है, और actually वो कहते हैं ना कि the eyes are the windows to your soul. Yes, absolutely. And that's how you penetrate. आप दोनों को मैं ये पूछना चाहूँगा, over the years, you know, the concept of love, पहले क्या था, एक predetermined thought कि हाँ love मतलब तो of course, you know, it's a girl, it's a boy. Anything beyond that used to be seen as problematic, which is never a problem, but देखा जाता था as a problem. Things are changing, you know, people like you, people like others who are coming up with projects, things are changing the right direction, especially when you don't have that, I would say, you're not skeptical to play these roles. It's very important that way. So, आप जो ये love का जो message आप दे रहे हो to the audience with the complete honesty and conviction that you're performing, ये जो love का जो message है, how important do you think is in today's time it is, especially for the audience जो लोग शायद अभी भी ये सोचते हैं कि, you know, if somebody is gay, there's something wrong about him. I think the biggest problem. That's my character, by the way. वो तो सर कैरेक्टर हो गया, असली जिंदगी में I'm talking. And the biggest problem मुझे ये लगता है जी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये 3 शब्द हैं, I love you, है ना. ये हमको जो I love you दे दिया है ये बॉलीवुड ने, इसने बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया है I love you बोलने को. मैं आज भी अपनी मम्मा को बोलता ना, मम्मा I love you, मम्मा आज भी तू बेटा करके छोड़ देती है. इवन अ मदर इन इंडिया I love you नहीं बोलती अपने बेटे को, बिकॉज I love you ऐसा टाइपकास्ट हो गया ना, अनफॉर्चुनेटली. एक लड़का एक लड़की को ही बोलेगा, और ऐसे हमारे दिमाग में बैठा दिया गया उसको. प्यार का जो आईना है वो ऐसा इतना नैरो कर दिया गया है उसकी होल को, दैट वी ओनली लुक एट I love you मतलब, you know, and you go to the West, you live in the West. Love is a generic emotion. It's for sharing. Correct. You know, you go to your mate and say, you know what, I love you. What fantastic work you've done. Yes. और यहाँ पर एक माँ अपने बेटे को टू करके छोड़ देती है. You know, वो भी बेचारी I love you नहीं बोल पाती, because you know that's how she sees it. और वो जो है, I think that is the first barrier we need to break. कि ये इतनी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंस है भाई I love you की, कि ये एक लड़का एक लड़की को ही बोलेगा और इस सेटिंग में ही बोलेगा, और ये क्या है. मोहब्बत जो है वो इमोशन बियॉन्ड जेंडर तो इन द फर्स्ट प्लेस है. आपने उसको पहले बक्से में डाला, आज आप बक्से से निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. Yes, very important. So that's what we try to say. You want to add something to so what? love is all about freedom. जी. It is acceptance. हमने लव को ही केज कर दिया है. तो अब उसको मतलब ये तो बहुत ही पिंजरे में डाल के फिर अभी खुद ही निकाल कैसे करेंगे हम. और and we are coming from a country of love. Take out any stories, any of our gods. It is all about love. And love was the basic constitution on which the entire, the society of India was constructed. So how can we avoid that? And so अच्छा, love को ना definition की ज़रूरत है, ना gender की ज़रूरत है, ना उम्र की ज़रूरत है, ना border की ज़रूरत है, ना जिंदा या मुर्दा वो किसी चीज़ से भी हो सकता है, वो किसी इंसान से भी हो सकता है, या किसी जानवर से भी हो सकता है. So, अगर इतना वाइड है हमारी पूरी कहानियों में, सालों से जो हम सुनते आ रहे हैं, तो now why again that discussion कि ये प्यार अच्छा है, ये प्यार बुरा है. Of course, I totally get it. But आप दोनों से I want to continue and understand, you know, when somebody is playing a character from an LGBTQ community,
most of the projects that we have seen, 10 में से कम 7-8 तो होंगे जिसमें in terms of body language nuances एक तरीके से दिखाया जाता है. You know, if somebody is a gay, they will behave in a certain way. But I've seen some really, you know, macho people having that kind of personality who are also gay as well. So, but वो दिखता नहीं है उतना in projects I'm talking about. Were those nuances discussed when you guys were given the brief कि you know ये आपका character है, इसको शायद आपको रखना है या फिर इसको नहीं रखना है? Were these nuances and briefs discussed? Yes. I discussed it with Hansal sir, and I mean we were very clear on one point that we don't want to stereotype it. Because it is not the case everywhere. You know, you're not supposed to generalize and stereotype it कि ये ऐसा है तो ऐसे ही behave करेगा. Exactly. इसकी body language ऐसी ही होगी, इसका बात करने का तरीका ऐसा होगा, इसका लहजा ऐसा होगा. Right. We are creating a real human being. So let's humanize it completely, and that's what we have done. So yeah, that's what we have tried. We had the discussion. Did you have that discussion as well with sir? Yeah. I think the initial brief, and we had that discussion as well. You know, Pratik and I. तो हमारा वो ये अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही था कि यार वो अगर आप स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस, आपकी स्टोरी का प्रेमाइस ही स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, तो आप स्टीरियोटाइप में रह के स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं कर सकते ना. तो इफ यू आर डिपिक्टिंग अ नॉन स्टीरियोटिपिकल लव बाय बीइंग अ स्टीरियोटिपिकल पर्सन, then it won't work. Then it won't work. मतलब ही क्या? Correct. एक funny सवाल, of course, you know the expertise that he has when it comes to cooking. When you guys were working, पूछना बनता है, did he treat you with some delicacies अपने खुद? A lot of them. क्या? निहारी. अरे जो उन्होंने बोला भी है, I think that's always in his mouth lurking. मतलब ये है कि जो मेरा लास्ट डे था शूट का, जी. और सुबह में शूट कर रहे थे, तो मेरा सीन खत्म हो गया जो था, तो हंसल ने उसके बाद इनका शॉट था जी. वो पूरी निहारी बनाते हैं. तो हंसल ने कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं शाम में? बोला क्यों? बस वर्सोवा जो पास में है, बोले बस अगर आप फ्री हैं शाम में तो वापस आ जाइए. बोला बताओ क्या करना है? बोले निहारी खाएंगे. अरे वाह. जो एक्चुअली पकड़ी थी इन्होंने, एक्चुअली शूटिंग में बाकायदा बनाई. ही हैज़ नॉट ये नहीं कि कुछ बन के आई और दिखा दिया. इन्होंने बाकायदा एक लाइक है ना. मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ. तो भाई मैं पहुँच गया. मैं तो इंतज़ार में बैठा था कि कब आएगा कॉल, कब आएगा कॉल. आया कॉल 6:30 बजे. मैं भागा और फिर क्या निहारी. Who will miss that opportunity? अरे और फिर ऊपर से प्रोन वगैरह मंगाई और सारा यूनिट, हम ही नहीं सारा यूनिट खाया. भाई इतनी ज़्यादा निहारी सब खत्म हो गई. मैं टाइम पर पहुंचा, मैं नहीं तो मुझे नहीं मिलती. But lastly, you know, we are running short of time. एक last सवाल आप तीनों से मैं ये पूछना चाहूँगा. It's a common question. Of course, we're talking about this project. ये जब आएगा 13 May को people will see it. But everybody has their own reason. That one special reason, which is why they want to associate with the project. Your reason might be different to yours, and your reason might be different to theirs, sir. वो आप तीनों के लिए क्या reason था? Which is why आपने तो शायद already कहा भी कि हंसल sir was the only reason. मैं नहीं मतलब that he because जब मैंने मुझे पता गया तो मैंने I trusted because I said अगर हंसल मेहता है, sensitive director है, I would like to work with him. Yes. That's it. Yes. What was it for you both in the special that one reason कि नहीं ये तो करना ही है? I think खाने को to put food in the center of love. Yeah. And to be there when food is there in the center of love. That was the selfish reason. Yeah. कि अगर खाना मोहब्बत के बिल्कुल बीच में तो हम साथ में होने चाहिए. And that, I think कहावत भी है ना. I think, you know, if you want to reach someone's heart, then you have to go via the stomach. So I think that's quite an interesting. Your special reason, sir? So I had seen Modern Love, जी. and I always wanted to be a part of this type of storytelling. तो ये एक हो गया, दूसरा है हंसल sir, for sure, and the story. Yes. Bye. Yes. The moment I was given a one-liner, I was sold there. I said, "This is it. Let's do it." So for me, everything came correctly together. Yeah. But last question, आपसे मैं specifically I want to ask this. After so much of fandom, popularity, you know, love and appreciation from Scam, that was a different character altogether, realistic character, swag, etc. Everything. This you're breaking down all that, you know, with this one. So it's been quite a fascinating, I would say, journey from top to down, yet down to up, jo bhi ho. So now that you know that people, your audience is also expecting that kind of stuff from you. So are you constantly having this thought in your mind कि नहीं यार चलो बहुत experiment कर रहा हूँ तो I should probably continue that way, या फिर you're fine to playing mainstream characters as well? No. I'm open to everything, different formats, different characters, different stories. Yeah. And this just gave me an opportunity to create something which I have not done.
So yeah, I mean it works for me. I'm always open for experiments. Wonderful, wonderful. Experiments jab tak sahi ja rahe, nothing more than that. Thank you so much all of you for joining us on the Bollywood Talk Show. It's a pleasure. I wish you all the best for Modern Love Mumbai 13 May ko. Everybody, I hope it surrounds with good reviews and goes positive response. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. That's a wrap on the Bollywood Talk Show on IWMBuzz. See you all for more. Thank you so much. Hi, I'm Talat Aziz and you're watching me on Bollywood Talk Show on IWMBuzz. Hi, this is Pratik Gandhi and you're watching me on Bollywood Talk Show on IWMBuzz. Hi, this is Ranveer Brar and you're watching me on Bollywood Talk Show on IWMBuzz.